वो है अनिल नौरिया साहब, अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी सहमति के बाद हम उनके नाम की घोषणा करेंगे। लेकिन हम लोग की इच्छा है कि अनिल नौरिया साहब अध्यक्ष बने। आज जो लोग आए हैं, जैसे इंदिरा उन्नी नायर जी हैं, जैसे इंदिरा उन्नी नायर जी का हमारी पार्टी से पहले जुड़ाव ये रहा है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं थे, जो जिनका हाल में ही देहांत हुआ, बलवंत सिंह खेड़ा साहब ने, और उसका अंत में क्या हुआ वो तो इंदिरा उन्नी नायर जी बताएंगी, क्योंकि वही उसकी वकील थी। और अब इंदिरा जी हम लोग पार्टी की तरफ से दूसरा केस लेने जा रही हैं। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अयोध्या के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जो आयोजन हुआ, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री और पूरा सरकारी अमला शामिल हो गया, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हर एक साल पिछले साल से ज्यादा दिए जलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अरे भाई, आपका रिकॉर्ड है तो उसको रहने दीजिए, उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो 50,000 दियों से शुरू हुआ और पिछले साल उन्होंने कुछ 17 लाख या 22 लाख दिए जलाए। 1 लाख लीटर तो सरसों का तेल लग गया उसमें। और वो भी जलवाया किसके माध्यम से? राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद के माध्यम से। तो अब बताइए विश्वविद्यालय का क्या काम है? Non-implementation of the Places of Worship Act 1991. The present conference is being organized under the banner of Socialist Party India as well as Socialist Lawyer Forums, and we have speakers. So I want to, all the speaker has already taken the seat, so there is no need to invite anyone right now. So we have Mr. Colin Gonzalez may join. Yeah, Colin Gonzalez may join. So we have Mr. Pankaj Thomas, who is the President of Socialist Party of India. We have General Secretary Mr. Shyam Gambhir of Socialist Party India. We have a very prominent lawyer, Ms. Indra Unni Nair, who practices in Supreme Court. We have Mr. Anil Noria, who practices in Supreme Court. And we have Ms. Varghese, and we have Sandeep Pandey. Two things are taking place under the leadership of Socialist Party. One is the formation of a lawyers forum. Another is a discussion on a very important subject, that is the Worship Act 1991. Both issues we are discussing together. Already a frame of a committee for the purpose of organizing the socialist lawyers all over India has started. At the same time, I may inform you there are socialist lawyers organizations very effectively working independently without the national link. Indian Socialist Lawyers Organization, ISLO, its name, and every month they conduct program, and very important program, which has attracted public, press, and court, and advocates are going on. There is a nucleus, and they on important subjects they conduct seminars, meetings for agitations, and all that. That is called ISLO. Now a national form has come up at the behest of our friend Mr. Nishant and others in Delhi. Even amongst these, there are other lawyers sitting, and altogether a formation of a national level movement has been started. I do, from my experience, I would like to tell you, a forum which is formed among the lawyers will have very great importance, especially basing on the socialist principle. The basic principle of our constitution is socialism. And our constitution will come truthful and also effective when the socialist principles are implemented. This is a commitment of the country after getting the freedom.
And for that purpose, we should have our organization all over India. And we have to organize it. May I share my experience that, in fact, I was one of the founder of the largest advocates organization present at working. My senior member of parliament, Mr. Ishwar, he was a famous lawyer, he was there. With his assistants and some of the, basically there, I think they are well organized, all India level, state level, well network there, but it has gone under the control of the CPM, Communist Party March. Surely that is growing. It has got growth all over the states. And ILU, that is called Indian Lawyers Union. Now we will have our own socialist movement, the socialist union, which will become bigger than ILU. ILU is now quite capable organization amongst the lawyers all over India. And we may also get our strength. I hope also. I am not going into the details. The need of organizing the lawyers, I need to emphasize, when they are the sentinels of democracy, to maintain democracy, socialist lawyers should form. The other subject, whether I should deal now or later. No, it's the other important subject which we are going to discuss is the Worship Act 1991. There are other lawyers who will speak on that in detail. But I would like to submit that is the most important subject of the day. When the Ayodhya issue has been settled in one manner, settled means settled in one manner, as a compromise or something. Still the legal question behind is pending. And the persons who are coming here and speaking the day on which we have gained the freedom, that position has to be maintained in the country. That is the gist of the act. But Ayodhya, since case is there prior to freedom itself, and there are some other cases pending at that time, that has been accepted. But now new issues are coming up. Vapabi case, that is Benares. Under the mosque there is Shivalinga, or a temple was functioning, so that it should be excavated, and the archaeological department should be permitted to do that, and then that should be captured back by as a Hindu worshipping place. A dispute has come up. Another dispute has come up in Madhura. Madhura was a place where Ramayana or Mahabharata or such background is there, and that place has been conquered by Mughals, and their mosque was constructed. That mosque has to be removed. Here in Qutub Minar, that there is temple which was being worshipped by a certain ancient time, certain Hindus, and that has to be excavated, and Qutub Minar is to be removed, and a temple has to be constructed there. All these issues may come up in other places also. In my place, I am coming from Kerala, a place called Cheraman Palli. Cheraman Palli means Cheraman is the king of olden days, prehistoric days. He came there and he converted to Islam, and he started a mosque. That mosque is very important mosque in all over India, Cheraman Mosque. He was a Hindu or whatever it be, he was a not Muslim, because he became a Muslim and he started a mosque. Now, issue may come, Cheraman Palli is to be excavated, and that is in Kerala. Cheraman Palli is excavated, and there a temple is coming. What will be the fate? Similarly, in everywhere it has come now. So there was Narasimha Rao, when he was the chief prime minister, felt that there should be an act to control this. So this act was brought. That act is in tune with the constitution. In the constitution which stands for secularism. All religions are equal in India. Indian constitution declares that it is not opposing any religion. That it is the religion. All religions have equal rights. They have the right to worship. And this we declared on the 15th August 1947. And on that day,
according to the basic law. My friend will explain that. What is a basic law? Basic law means an issue when there is a dispute on a particular day. If the possession is with whom, that has to be accepted. Isn't it? So that is the principle. If that principle is applied, what is to be done? But how? But here now there is turning point. We have Jains and others, other old Buddha term. There was some sort of worship inside there, so it has to be excavated, and there should be a temple. This process and communal trouble and fight with the communities, how it can be prevented? Only by an act. But that act was passed in 1991. Unfortunately, when I went through and read it in detail, I find that there is no enforcing clause. Law for the purpose of intimation, there should be a clause by which it has to be implemented. If it is not implemented, what is to be done? That is called the execution provision of a law. When I go through the law, I find that it is only a declaration. Since it is a declaration only, some Subramania Swamy and BJP National Secretary all have filed a case before the Supreme Court. That case is not pending. List pendants. So when it is list pendants, what will happen? This is the question now. Now it is election time. To canvass Hindu votes, somebody can provoke this in some area, which may lead to riot, which may lead to the all sort of destabilization in the society. Socialist Party wants to oppose its tooth and nail. So this seminar is part of that. And we declare that we don't want such a situation. We want the secularism which is defined and implemented as the commitment of the Constitution, which is laid down in the preamble itself. Therefore, on the day on which India got freedom, this is the gist and intention of the act. Now, that act is very important as from today. Today, the subject is of Ayodhya, construction is over. All process of temple and religious aspects are being used for canvassing votes to influence an election, thinking that majority of people are Hindus and therefore if we project an issue, they will succeed. But I would like to tell that is a false notion. Hindus as such, or the influence of these people over the Indian population is not that much. If you calculate and analyze, you will find that it is only less than 30%. 70% is outside the villa. Here, Anuschuri Jadi, backwards, and such people are the majority. 70% is the majority. They are not communal. They are not going to argue like this. They are fighting for their livelihood. We have to unite them. For that, what is to be done is a caste census. So caste census is important for Socialist Party. So Socialist Party declares that caste census is to be taken. Caste has to be, so long as caste is maintained, their pro rata right is to be given to them. That is their constitutional right. Equality is a constitutional right of every citizen in India. That equality to get, no doubt, there should be provisions in the Constitution. So, this act is important. To get equality, this act has to be implemented. And caste census is to be implemented. This 30% which is there, Mr. Modi is trying to canvass it through manipulation. And that manipulation is taking place. And we want to oppose that manipulation. Socialist Party is organizing that movement to oppose this manipulation. There we declare, being the president of the Socialist Party, I declare that we stand one against BJP all over India. We stand to support any India movement which has come up, irrespective of the fact that whether we are
we are in it or out it and all. We are not thinking. We feel that the present regime is to be down in this election. And we feel, we understand that there is only 30% for them. But unfortunately, by dividing other parties and by dividing divisions and creating communal tension and canvassing, telling or thinking that they can bring a Hindu Rashtra, the RSS slogan at the time of its formation, they are going ahead. Socialist Party declares that we are against it and we want to form the unity of the 70%. The Anuschut, the Jadi, the backward, the Muslims, the Christians, minorities, and all together. So this is in the background of the present act what I have to declare in the name of Socialist Party. Friends, I am not going much. Other friends are there, they will talk. Lawyers are there, they will present their viewpoints. With this declaration, I make my duty, declare this conference open. Okay. मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगी। हालांकि हमारे जो भी केसेस हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, पर कोशिश होगी। मैं केरल की हूँ तो मुझे माफ़ करिए अगर इतना पक्का विशेष धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हाँ दोबारा मैं धन्यवाद करूँगी। आज के दिन एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए था, पर उसके अलावा जो पहले से जो हमारा जो कनेक्शन है इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के साथ खेड़ा साहब के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो और उस विषय में के बारे में जब बात करेंगे तो इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट certain judgments and the law as well. एक है Representation of People Act 1951, जिसमें जो इलेक्शंस वगैरह के बारे में है, और उसमें 1989 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके तहत only a party which declares itself to abide by the constitution, जो कि संविधान का सुरक्षा करेगी और जो उसके हित में काम करेगी और सपोर्ट में काम करेगी, उस पार्टी को, और उस पार्टी ने अगर वो डिक्लेरेशन भी दिया हो, और उसके अलावा दे हैव टू डिक्लेयर दैट दे आर सोशलिस्ट एज वेल एज सेक्युलर, उसके बगैर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू बी रजिस्टर्ड। तो उस बारे में हमने केस डाला था बिकॉज कई पार्टियों ने उसका उल्लंघन तो किया ही किया है, बट फ्रॉड के बेसिस पे ये कहते हुए कि हम उसका पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद एक्चुअली दे वर नॉट कंप्लाइंग विद दिस एट ऑल। तो उन्होंने फॉल्स अंडरटेकिंग दिया था इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बारे में केस डाला था खेड़ा साहब के जरिए। खास तौर से द पार्टी इन क्वेश्चन वाज शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल हैज 2 कॉन्स्टिट्यूशंस इवन टुडे, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो गुरुद्वारा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मतलब कन्वीनियंटली उन्होंने बनाया हुआ है जो कि फर्जी है। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उस संविधान के बेसिस पे ही उनको रजिस्ट्रेशन या उनका पंजीकरण किया गया है 1989 में। तो उस रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करते हुए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, और उस याचिका को तो ऑफ कोर्स कोई भी कोर्ट सुनने को राजी नहीं है। बहुत ही मुश्किल से उस याचिका को हमने मेड श्योर दैट इट हैज सर्वाइव्ड। कई बार डिसमिस करने की कोशिश की है। एक बेंच ने 2015 में पूरी तरह से केस सुन के जजमेंट को रिजर्व करके 5 महीने के बाद चीफ जस्टिस ने बोला कि मुझे रिक्यूज किया जाए, 5 महीने के बाद जजमेंट को रिजर्व करके। तो उसको भी हमने चैलेंज किया कि आपने इस तरह से कैसे किया। तो फिर वो ट्रांसफर हो गया बेंच, और अब ये केस चल रहा है। सारे प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब अचरज की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपोज कर रही है। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ये कह रही थी कि हम तो देखिए इसमें पार्टी भी नहीं बन सकते हैं,
हालांकि वो पार्टी 1 है, पर वो कह रहे हैं कि हम इसको अपोज कैसे करेंगे, हम तो बिल्कुल प्रोफॉर्मा की तरह बैठे रहेंगे, आप तो शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ आपने केस डाल दिया, तो लेट देम आर्ग्यू द केस. बट रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन हैज वेरी सडनली स्टार्टेड contesting the case very aggressively in the Delhi High Court. तो केस वहाँ पे अटका हुआ है. It is supposed to come up for final arguments. इसी दौरान unfortunately खेड़ा साहब पूरे हो गए, तो we have filed for impleadment of उनके legal heirs. उनका जो लड़का है, he will continue the case apart from another co-petitioner जो कि ओम सिंह सठियाना है, वो भी शायद इसी पार्टी के मेंबर हैं. तो हमने कहा है कि बिकॉज देयर इज अ रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, खेड़ा साहब ने इतना काम किया है, तो कैन वी ऑल्सो हैव हिम एज अ लीगल है. तो इलेक्शन कमीशन हैज वेरी अग्रेसिवली अपोज्ड इट. इट इज ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट दैट द इलेक्शन कमीशन, द रीसेंट लॉयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो related to times now one of the very aggressive proponents of what is it, pro BJP politics. So anyway, so right now it's being very aggressively contested. और ये कहा गया है कि you cannot have a legal representative of a person in a public interest litigation. उसको ऐसे ही चालू किया जाए. तो we are now asking for that to come to court. तो उसका status ये है. तो हम of course we are continuing with the case. बट इसी बीच खेड़ा साहब ने क्रिमिनल केस भी डाला था बादलों के खिलाफ, और वो केस इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. इट वाज सपोर्टेड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था जो एक समनिंग ऑर्डर था लोगों को, बादलों को बुलाने के लिए फॉर टू प्रोसीड एज अक्यूज्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी रॉन्ग ऑर्डर दे हैव dismissed the set aside the High Court, Punjab and Haryana High Court judgment. उसको हम रिव्यू डाले हैं, रिव्यू भी अभी जस्ट 2 दिन पहले डिसमिस हुआ, तो we will see how we can, whether we can take it forward in curative, because ये बिल्कुल गलत है, बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है. जो भी कानून हमने, जिस कानून का हमने सहारा लिया था, उस कानून को उन्होंने जिस इंग्रेडिएंट पर हमने भरोसा किया, मतलब रिलाई किया था, उस इंग्रेडिएंट को उन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया है. तो बहुत गलत ढंग से ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने. तो वहाँ पे वो केस है. नाउ कमिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ये जब बाबरी मस्जिद के बारे में देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, तभी ये कानून पास किया गया था. इट वाज एक्चुअली टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो इसी के बेसिस पे ये एक्ट लाया गया था. देयर आर प्यूनिटिव प्रोविजंस. ये you cannot change the character of any religious place as declared on 15th of August 1947. But अभी क्या हुआ है कि एक करके, first of all, एक करके people are challenging either the law or whether a place ought to be declared as a mosque or a place of a particular form of worship. और ये क्लेम किया गया है कि there must have been a temple earlier. अब अचरज की बात ये है कि जो राम जन्मभूमि वाला जजमेंट है, जहाँ पे they have declared that place and they handed it over to the Hindus to build a temple. The Supreme Court has done so, 5 judge bench. अब अचरज की बात है कि उसी जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपहोल्ड किया गया है, और ये कहा गया है, there are several pages from page, I think there are about 10 pages where it has been said that this is a law. The place cannot be changed. The nature of the temple or the masjid or the church cannot be changed, and you cannot raise further questions. So while a 5-judge bench has clearly gone on the presumption that the Places of Worship Act 1991 exists, उसके बावजूद the Supreme Court is today entertaining cases relating to challenge of the law itself. So yes, I think it's very important to oppose
any dilution of this act, or because what is going to happen is that in the name of religion, you're going to have a lot of conflict. So the very purpose of the constitution itself, jahan even before the amendment in 1976, jahan pe preamble mein secular or socialist लाया गया, plus the 42nd amendment, उससे पहले ही the very fabric of the constitution has secularism, and secularism means कि the individual is free to practice as well as propagate any religion of their choice, any faith, लेकिन the state जो कि सरकार है और political parties are also included, they cannot take the side of one religion. और ये एक 9 judge bench judgment है गोमाई करके, उसमें भी there are paragraphs and I can read those out, पर उसमें it's very categorical, मतलब बहुत ही स्पष्टता से ये कहा गया है कि कोई भी सरकार, तो ये तो जाहिर है कि सरकार मीन्स केंद्रीय सरकार और राज्य at the state level वो सरकार भी, और उसको इतना एक्सपैंड किया गया है कि ये भी कहा गया है कि no political party which aligns itself to one religion can continue to exist, और उसी के बेसिस पे हमने वो केरा साहब का केस भी फाइल किया गया है 13 अप्रैल। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट्स का पे जो प्रोटेस्ट हुआ था 1919 में, वो 6 अप्रैल को ऑल इंडिया लेवल पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रोटेस्ट 6 अप्रैल 1919 को हुआ, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो ये हफ्ता हमारी हिस्ट्री में बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, और इसलिए इसको नेशनल वीक कहा जाता है। और ये हमारे लीगल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो लड़ाई हुई, उसमें ये बड़ा सिग्निफिकेंट वीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बैकग्राउंड, ये 1991 का एक्ट है, लेकिन इसका जिक्र प्रेसिडेंट वेंकटरामन ने 11 जुलाई 91 को अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस, पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस प्रेसिडेंट वेंकटरामन ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि a bill will be introduced to maintain the status quo as on 15th August 1947 in order to foreclose any new controversy. That is apart from Babri Masjid. In order to foreclose any new controversy, the special cell established in 1988 to gather intelligence in communally sensitive districts will be strengthened with a view to preventing riots. तो ये इन्होंने साफ करा 11 जुलाई 91 को कि हम नया बिल इस पे इसलिए ला रहे हैं, ये प्रेसिडेंट वेंकटरामन का प्रेसिडेंशियल एड्रेस 11 जुलाई 1991 को, इसीलिए ये जो एक्ट है, ये जिस तारीख को पास हुआ या जिस तारीख को एसेंट मिला, उस तारीख से लागू नहीं है। ये इस 11 जुलाई 1991 से लागू है, क्योंकि उस रोज प्रेसिडेंट वेंकटरामन ने ये स्पीच दिया था कि अब हम कोई फ्रेश, दिस इज टू फोरक्लोज, हिज वर्ड्स आर, this act will be brought to foreclose any new controversy. So this is the purpose of this act. और यही बात, ये जो इनका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इस जब ये बिल लाया गया, तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, ये मैं आप बड़ा छोटा है, शॉर्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. Again, words of President Venkataraman are repeated. In order to foreclose any controversy in respect of any place of worship that existed on 15th day of August 1947, it is considered necessary to provide for the maintenance of the religious character of that place of worship as it existed on the 15th day of August 1947. As a consequence thereof,
all the suits or other proceedings pending as on 11th day of July 1991 with respect to any such place of worship may abate, and also further suits in or other proceedings may be barred. कि वो जो उस रोज जितनी proceedings pending हैं 11 जुलाई 1991 को वो अबेट होंगी और all fresh proceedings will be barred. ये statement of objects and reasons है, ये इस एक्ट का पर्पस है. तो इस एक्ट को इस दो एक्सेप्शंस थे, खाली वो जो एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड. हाउएवर द केस रिलेटिंग टू द प्लेस, वो जो बाबरी मस्जिद का जो पेंडिंग डिस्प्यूट है उस पे ये नहीं अप्लाई करेगा. कुछ ऐसे मसले थे जो 47 और इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर वो तय हो चुके हैं बाय कंसेंट एंड एक्विएसेंस, उन पे ये लागू नहीं हो. उसके अलावा ये फोरक्लोज करता है सारी कंट्रोवर्सी. ये बात प्रेसिडेंट वेंकटरमन ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कही, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में भी है. और उसके अलावा ये जो अयोध्या का जजमेंट इंदिरा ने जिक्र किया कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर द preservation of the religious character of places of worship as they existed on 15th August 1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustices of the past by providing the confidence to every religious community that their places of worship will be preserved and that their character will not be altered. The law addresses itself to the state as much as to every citizen of the nation. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. ये भी उन्होंने कहा कि ये law हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है. सेक्शन 4(1) clearly stipulates that the religious character of a place of worship as it existed on 15th August 1947 shall be maintained as it existed on that day. Section 4(2) specifically contemplates that all suits, appeals and legal proceedings existing on the day of the commencement of the Places of Worship Act with respect to the conversion of the religious character of a place of worship existing on 15th August 1947 pending before any court, tribunal or authority shall abate, मतलब खत्म हो जाएगा. And ये उनके सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज है अयोध्या के केस में. And no suit, appeal or proceeding with respect to such matter shall lie after the commencement of the act. मतलब इस मसले पे कोई सूट और प्रोसीडिंग विल नॉट लाई. ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अयोध्या के मसले में. मसला आया इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ, तो ये कहा गया कि ये तो डिटरमिन किया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 में इस जगह का क्या कैरेक्टर था. ठीक है, पर वो डिटरमिन करने के लिए आप खाली वहां तक जा सकते हैं कि कोई ये कहे कि मेरे पास एविडेंस है कि 15 अगस्त 1947 में यहाँ क्या हो रहा था. उससे पीछे आप नहीं जा सकते. तो ये मसला कि सर्वे होगा, आज वहाँ कुछ मिल गया, कल परसों मिल गया, पुराना वो फलानी सदी में ये हुआ था, ये सब बातें कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा. ये बात साफ है, पर उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही हैं और बर्दाश्त की जा रही हैं. ये तो हुआ लीगल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. लेकिन इसके अलावा भी एक एस्पेक्ट है. सन 24 में एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि कुछ झगड़े बढ़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ने लगे थे. तो एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जब गांधी जी फास्ट कर रहे थे यूनिटी के लिए. तो अक्टूबर 1924 में एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हिंदुस्तान के सब प्रोमिनेंट लीडर्स दिल्ली में उन्होंने शिरकत की. उसमें मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद भी मौजूद थे. मौलाना मोहम्मद अली, मुस्लिम लीडर्स और पारसी लीडर्स, क्रिश्चियन लीडर्स
सब मजहबों के लीडर उसमें मौजूद थे और हिंदुओं के स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। और इन लोगों ने क्या रेजोल्यूशन पास किया वो मैं आपको बताता हूं। दैट ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ व्हाटएवर फेथ और रिलीजन shall be considered sacred and inviolable and shall on no account be attacked or desecrated. ना उनको अटैक किया जाएगा ना डिसिक्रेट किया जाएगा on any account. Whether, now this is very important, whether as a result of provocation or by way of retaliation. मतलब कोई ये आर्ग्यूमेंट की फलाना ये किसी ने पहले तोड़ा था इसलिए मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, दैट आर्ग्यूमेंट is closed. They said 1924 में ये रेजोल्यूशन के इसको ध्यान से सुन लीजिए that all places of worship of whatever faith or religion shall be considered sacred and inviolable and shall on no account be attacked or desecrated whether as a result of provocation or by way of retaliation for sacrilege of the same nature. कि उसी किस्म का सैक्रिलेज पहले हो चुका है वो कारण नहीं बन सकता उसको फिर से डिसिक्रेट करने के लिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ व्हाटएवर फेथ और रिलीजन टू प्रिवेंट सच अटैक और डिसिक्रेशन एज फार एज पॉसिबल एंड वेयर सच अटैक और डिसिक्रेशन हैज टेकन प्लेस इट शैल ऑलवेज बी प्रॉम्प्टली कंडेम्ड। और इसका सोर्स भी मैं आपको दे देता हूँ, ये इंडियन एनुअल रजिस्टर 1924 वॉल्यूम 2 पेज 156 पे ये रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने ये पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी उन सब के नाम भी इस किताब में दर्ज है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जवाहरलाल जी लिखते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल 20s मेनी अटेम्प्ट्स वर मेड to settle the communal problem by mutual talks and discussions. Unity conferences they were called. The most notable of these was the conference convened by Maulana Muhammad Ali, the Congress president for the year in 1924 and held in Delhi under the shadow of Gandhiji's 21-day fast. Gandhi ji fast कर रहे थे और ये conference के resolution के बाद ही उन्होंने अपना fast तोड़ा। These were many earnest and well-meaning people, and there were many earnest and well-meaning people at these conferences, and they tried hard to come to an agreement. Some pious and good resolutions were passed, but the basic problem remained unsolved. और ये क्यों unsolved रहा उसका वो कारण बताते हैं। It could not be solved by these conferences, for a solution could not be reached by majority of votes, but by virtual unanimity. ये जब तक पूरी यूनानिमिटी ना हो तब तक सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि there will always be extremists of various groups present whose idea of a solution was a complete submission of all others to their views. और जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं तब तक ये इस रास्ते से सोल्यूशन होना मुश्किल हो जाता है। Indeed, one was led to doubt whether some of the prominent communalists desired a solution at all. हमें ये डाउट होने लगा कि ये जो कम्युनलिस्ट वहाँ मौजूद है, कुछ जो मौजूद थे वो क्या सल्यूशन चाहते भी थे या नहीं। तो ये वजह बताते हैं कि जब कोई ऐसी इशू उठे जो जिसपे यूनानिमिटी ना हो, कुछ एक साइड दूसरी साइड में एक एक्सट्रीमिस्ट भी अगर आ जाए तो वो झगड़ा फैलाते रहेगा, और झगड़ा फैलाने का मकसद ये है कि वो चाहते नहीं कि ये सॉल्व हो। पर इस बात यूनानिमिटी के पॉइंट में मैं आपको एक पॉइंट ऑफ फैक्ट बता दूं, ये जो रेजोल्यूशन जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, यूनिटी कॉन्फ्रेंस 1924 का, ये यूनानिमसली पास हुआ, ये यूनानिमसली पास हुआ, इसमें कोई डिसेंट नहीं था। तो इस कॉन्फ्रेंस में स्वामी श्रद्धानंद भी थे और मदन मोहन मालवीय भी थे, जो जिनको ये जो इनको तो डिनाई नहीं कर सकते कि ये हिंदू लीडर्स वाकई हिंदू लीडर्स से झूठ के हिंदू लीडर्स नहीं थे। और आपको मालूम है कि जब ये बाबरी मस्जिद की मूवमेंट चल रही थी
तो अडवाणी जी का एक बयान भी था उस जमाने में, ये हमारे रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, हमारा तो ये पॉलिटिकल। तो जब आपका पॉलिटिकल मूवमेंट है तो नेचुरली यू विल नॉट वांट अ सेट। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस अफेयर एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ ऑल दिस प्रोसीडिंग्स आल्सो। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अब इसको आप चाहते हैं एज एन इंटेलेक्चुअल कि ये इम्प्लीमेंट हो या नॉन इम्प्लीमेंट हो, इसको जरा शॉर्ट में बता दीजिए। क्योंकि इस एक्ट के एक आड़ में बाबरी मस्जिद टूटी है, क्योंकि इस एक्ट ने वो रास्ता खोला जिससे बाबरी मस्जिद का तो खात्मा हो सका, लेकिन इस एक्ट ने ये अश्योरेंस दी, ये गारंटी दी, गारंटी आजकल बड़ा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इस एक्ट ने ये गारंटी दी कि इसके बाद और नहीं, इसके बाद और नहीं, ये फुल स्टॉप। और यही हम कह रहे हैं कि फुल स्टॉप, दिस एक्ट शुड बी एनफोर्स्ड एज अ फुल स्टॉप। जिनका कैरेक्टर बदला गया है और दैट इज द एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ दोस। पर हमारा हिस्ट्री, हमारा लॉ और हमारा हिस्ट्री उसके मुताबिक हम चलेंगे, और हमारा हिस्ट्री साफ कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है। 1924 का यूनिटी रेजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें तो बाबरी मस्जिद का एक्सेप्शन भी नहीं था, ये एक्सेप्शन तो 91 के एक्ट में आया, तो उसमें तो टोटल बैन था कि आप किसी भी जगह का कैरेक्टर नहीं बदल सकते, चाहे उस किसी भी आर्गुमेंट पे, किसी ये कहें कि पहले सेक्युलरिज्म हुआ था इसलिए आप बदल देंगे, वो आर्गुमेंट आपको ओपन है। और अब कानून ने एक डॉक्ट्रिन होती है स्टॉप इट, आप कोई इस कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का फायदा उठा के बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, now you are also, now those who want other places to be broken or changed in character, they are stopped according to us from proceeding further because they have benefited from the act already. And now having benefited from this act, and this act having been endorsed also by the Supreme 5-judge bench of the Supreme Court, it is not open to anyone to argue that they are now able to change the character of any place under any circumstances. अब ये एक आर्गुमेंट है कि साहब हम कैरेक्टर तो नहीं बदल रहे, हम खाली वहाँ एक राइट की बात कर रहे हैं, एंट्री। नाउ ये जो है ना, ये फुट इन द डोर का इन फिलॉसफी, ये आपको मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद का लिटिगेशन का हिस्ट्री आप देखेंगे तो 1885 का जो सूट था जो महंत रघुवीर दास ने फाइल किया था फैजाबाद के कोर्ट में, वहाँ उनका दावा ये नहीं था कि राम यहाँ पैदा हुए वो डोम के नीचे, वो खाली इजाजत मांग रहे थे इस बात की कि बाबरी मस्जिद के बगल में हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजाजत दे कि हम मंदिर बना। दिस वाज द ओनली एक्ट इन महंत रघुवीर दास सूट which was dismissed in 1885 by the फैजाबाद court। पर बढ़ते बढ़ते एक शुरुआत होती है, फिर उसमें कुछ और जुड़ जाता है, फिर उसके बाद कुछ और जुड़ जाता है, फिर उसके बाद कुछ और। असली बात यह है कि ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे फुल स्टॉप हो, जैसा कि ये एक्ट की फिलॉसफी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट में ने कहा है उसी को अपहोल्ड करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहती है कि ऐसी परिस्थिति एक पर्टिकुलर तारीख थी जबकि हम लोग गणतंत्र बने, उस तारीख तक जो भी था एज अ स्टेट हम कर चुके हैं, तो उसको फिर किस लिए ये खोला जा रहा है, हमको मकसद भी देखना चाहिए और कौन खोल रहा है, किस लिए खोला जा रहा है, फॉर पॉलिटिकल मीन्स एंड इज दैट परमिसिबल। तो हम इसीलिए इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और इससे क्या मिलेगा, क्या लोग मांग रहे हैं, तो इट इज जस्ट अननेसेसरी टू ओपन इट एंड द ओनली पर्पस इज टू गेट वोट्स एंड डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा कभी पहले 20 साल पहले हुआ है, 50 साल पहले। और एक चीज और है, वो राम जन्मभूमि को क्यों सेपरेटली
क्यों इस एक्ट के बाहर रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी तब केस पेंडिंग था, तो इसीलिए ये अलाउड नहीं था। जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो इसीलिए एक्चुअली इट इज रिक्वायर्ड, तो जब कानून पास किया गया इसीलिए उसको इसके बाहर रखा गया। लेकिन वजह एक्ट का ये था कि राम जन्मभूमि पे ऑलरेडी इस तरह का पॉलिटिकली ये शुरू हो चुका था, तो इससे आगे बढ़ने ना दे, इसीलिए ये कानून उपस्थित किया गया। और इतने सालों से है, तो अचानक ये ऐसी क्या आफत आई है कि हमको एक एक करके खुदाई करनी है, और ऑब्वियसली ये टारगेटेड है, तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इस एक्ट के बाद जो स्टेटस है वो रह जाएगा एंड दिस विल हेल्प आउट एवरीवन। मेरा एक प्रश्न है कि जब एवरी रिलीजन, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, सब में रोज़ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, रोज़ उनमें नए नए डिविजन्स हो रहे हैं, वो खुद में ही आपस में लड़ रहे हैं और वो नई तरह की अपनी पूजा, अपनी तरह की पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। क्या इससे कंट्रोल हो पाएगा? व्हाट यू फील कि उसी स्टेज को आप रखना चाहते हैं जिस प्रकार से हर धर्म में अपने आप में चेंजेज आ रहे हैं, तो इस एक्ट से आपको लगता है कि आप कर पाएंगे कंट्रोल? Any attempt is made to change that character, then this act will act as a bar. Now, if anybody says that no, this had some other character, then the onus will be on that person to produce evidence to show that it had some other character. But the evidence of what the Patriarch of Antioch may have said in 200 years ago, that will be totally out of court, because the only issue will be the character of the place on 15th August 1947. Now, so far as a new temple is concerned, suppose somebody sets up a new place of worship, this act does not concern. In England, it used to be said that if Parliament passes a law that all blue-eyed babies will be slaughtered. If Parliament passes a law in England, then there is nothing that can be done about it. It has to be implemented. Because in their country, there was no written constitution. So a law passed by Parliament was considered supreme. But that is not the case in our country. So here, a law passed by Parliament can be challenged on the ground that it is ultra vires the Constitution. Not only that, under the basic structure doctrine, even a constitutional amendment can be challenged on the ground that it does not, it detracts from the basic structure or it destroys the basic structure. इन सभी ने एक एक पॉइंट्स को उठाकर ये स्पष्ट करने की कोशिश की वर्शिप एक्ट जो है उसका क्या महत्व है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यह सवाल उठाए संतोषजनक उत्तर भी मिला होगा। हमारी पूरी कोशिश इस बात की है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की, कि जितने भी सेकुलर लोग हैं जो देश में अमन चैन और भाईचारा चाहते हैं, सबको साथ लेकर इस एक्ट के बारे में अपने कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत समझते हुए हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जितने भी प्रेस के हमारे वरिष्ठ जन, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बाकी विद्वान लोग जो हैं उपस्थित रहे, उन सबका सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ।